कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best. Toppers. Let's have one more top ranker holder, this time rank 42, All India, Dr. Bhavesh from GDC Patiala, giving his valuable time after the exam celebrations and everything. Thank you, Dr. Bhavesh, for joining this session. Congratulations to you, your family, and everyone behind your success. All again and again, congratulations. Thank you so much, sir and ma'am. It has been a pleasure here, and it was totally unexpected for me to have such a rank 42 because I never expected it. It was a miracle for me, but all it has been possible due to your support. Thank you. Thank you. And I really mean it. I really mean it. When the result came now, I was like shocked. First of all, I couldn't articulate whether it's my result or not. I read it 4 times that my application ID is same or not. So I was really shocked at that time. But all this happened due to your support because I followed every advice that you told me. Dr. Every Dhruv will give single you, advice. Dr. Dhruv will give you articulator to articulate this news now. Congratulations, Beta. Thank you so much, ma'am. So how you made it possible? What was your magic recipe or what you did? I think, ma'am, my magic recipe was you only. Yeah. It was everything that you told because it was for the first time that I'm going to give such an exam. I haven't given any other exam. I have not because I thought I would not be able to compete with anyone. So I'm going to try my luck only in the NEET examination at the very first time only. So Okay. I was connected with you from the September 2022 only. I Start started of my batch. preparation in Yeah. September. Yes. So in September, October, November, I studied. After that, I fall apart. मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी उसके बाद. मतलब कारण? डिस्ट्रैक्शंस वगैरह जैसे आ गई कॉलेज वगैरह में या कोई फंक्शन आ जाते थे या कुछ आ Festivals जाता आए थे, college festivals and यस यस सर. सो मतलब उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे कभी कभार पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा. तो फॉर मी जब इंटर्नशिप खत्म हुई आई वाज होपलेस कि मुझे लगा अब तो होगा ही नहीं. बट एक बार ट्राई करते हैं दोबारा. सितंबर से मैंने दोबारा तैयारी शुरू करी. मैंने आपका एक वॉइस नोट सुना था मैम. उसमें आपने बोला था कि इवन इफ यू हैव बीन कुंभकर्ण थ्रू होल दिस ईयर यू कैन स्टिल मेक इट थ्रू. And even my family was very supportive of me. They said, you give it a try. No matter what happens, you always have millions of opportunities out there. You can do so many other good things. Even after failure, you are going to be succeeded if you believe in yourself. You always told me this also, that keep believing in yourself. It's a very underrated statement, but I think this is very, very important thing that if you are believing in yourself, you can achieve anything. True. Yes, and after in September, so I started studying from the very beginning, like from scratch itself. Mm. So it was really difficult for me to complete my whole syllabus within that 3-month span. So day and night, I just studied. There was a roller coaster ride of emotions. Like when you're starting such a preparation, such a short notice, like I was crying. Even after crying, I was studying. Wow. It was just 3 months because it was totally hopeless for me. Even I have given INICET, I was not qualified there. CPD sir taught such a wonderful CPD. I got more interest in that subject as compared to any other clinical subject. And most of the questions of INI were from CPD. And I know those questions, but I did everything wrong. So that was a setback for me. I again started everything. That was a point when I thought that yes, revision is the key only. That if you do multiple revisions, you can succeed in such exam. It's easy. And you also told me the same thing, that a little focus can actually help you win this game. So I started doing that preparation again. So by December, I had completed my syllabus once. So I started revision along with your quizzes. That quiz really helped me a lot. I think 2 times revision I have done with the quiz only. Yes. Otherwise, I would not have been able to attempt. मतलब इतनी रिवीजन मुझसे नहीं हो सकती थी इतने शॉर्ट नोटिस में.
You know, और when ये I ना was मतलब taking those quizzes, na, I was thinking maybe, students will hate me. Sir, I was thinking this. no She comes ma'am every actually night. She comes every morning. They will hate me. And ke bhai, ma'am, let us study. Let us do something. But I was like, no, I will make you learn. Whatever happens, this was my pledge, sir, this year. yes I will ma'am make studying the subjects easier. this quiz only helped me. There is no doubt in that. Without quiz I would not have been able to complete a revision. It was totally impossible for me. Even for pharma, what I did in the last month was to read pharma every single day. Very And good. I started writing classifications again and again because एक अंदर से वो आ गया था कि नहीं ये ऐसे कैसे है कि फार्मा हो ही नहीं रही है, मैं तो करूंगा इसको, तो मैं तो याद ही करूंगा इसको चाहे जो मर्जी हो, चाहे इसमें क्वेश्चन आए ना आए, मैंने करनी है ये. So I read everything that you taught, all the mnemonics that you said. I learned everything. I rewrite everything. I made shorthand notes of pharma also. And that chemo man lecture was amazing. One question came from that chemo man only, methotrexate wala. But that was really all the questions. Previous year questions were also from that 2-3 pages that you taught in chemo man wala topic. Like I was very intrigued about the pharma. That yes, this is the way to read it. So I read every single day the difficult subject that I encountered. Even biochemistry, I was very afraid of biochemistry. But the PDF that you sent, sir, I took a print out of it. And at the last day, at the last week only, I read those charts only. And I learned everything that sir has written in that. And most of questions, like 85 to 90% questions of biochem were from those charts only, I think. Even जो pulse भी मैं solve करता हूँ तो वो हो जाते थे उस chart को पढ़ने की मदद से. Like everything was worth. Great. Dr. Dhruv. तो भावेश, Yes. जो मेरे को आपसे पूछना है, after hearing your first session, I understood that you have put in a lot of effort during the last few days of your preparation. तो जिन दिनों में आप बहुत motivated नहीं feel करते थे, those Yes, sir. bad days when you feel like just quitting and not, still working on it, what made you keep your focus, your motivation, and your dedication going on, especially during the bad days? All of us, whether we are students or teachers sir. or clinicians, we need to know from you that how did you maintain your momentum on those bad days? Yes, sir. Sir, those days are like inevitable. In everybody's life, it is going to come. So what I did was I could go for a walk to settle my anxiety. Or some days are really bad that I even don't feel like going out of my room only. Like I would stay there. So what I did first of all was to process that this is very normal. First of all, I need to accept that this is a normal feeling and we have to move on. It's okay. It's a part of life. It's a part of life journey. Like not only in this preparation, I think in every phase with everybody this is going to happen. Like happiness and sadness is going to come, anxiety is going to hit at every point, whether it's difficult or not. What I did was I would start reading like Bhagavad Gita, like without hurting anyone's like sentiments or all. Like I consider it a book only, not in a religious way but in a way that it is going to help me out. So whenever I start to read the Bhagavad Gita, any one of the lines or teachings that I understood from it, so that settles down my anxiety that everything is temporary, everything is, it's not permanent, even happiness is not permanent. So yes, you can do this. So first of all I accept that emotion, and then I would collect my courage to overcome that, and then again I started studying on that day. Wow. And what's your age, beta? Sorry, but we can ask you. What's your 24, age? ma'am. 24. So how are you so mature? Ma'am, I don't know. No, He's but enlightened because of reading. enlightened. Yes, you are truly enlightened at this age. Thank you so much, ma'am. But I think enlightenment is a really big term, I think. So it's like maybe the start of it, but it will help you in long run, definitely. Thank you so much, sir. So, Dr. Bhavesh, the overall journey of preparation, hard work, you told you fell apart, then you started again, but then you started really tough way. पूरी जर्नी में कभी ऐसी एक फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि अब मेरा सिलेक्शन तो मैं करा के ही रहूंगा, रैंक तो लेके ही रहूंगा? एक जिद आती है ना, ये तो होके ही जिद रहेगी। तो थी मैम, जिद पूरी थी स्टार्टिंग से that I have to take the government seat because I couldn't afford
not afford also, but I really don't want to go to a private college. It was always from my mind from the very beginning that I have to go in a government college only. So when I came out of the exam, I cross-checked so many questions, about 20-25 questions. They were all were wrong. तो मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, मैं क्या ये तो सारे गलत हो रहे हैं, बाकी भी गलत होंगे। तो मतलब बिल्कुल मेरे को उम्मीद नहीं थी। मोर ओवर मेरे मॉक टेस्ट में कभी 600 से ऊपर मार्क्स नहीं आए आज तक। तो फिर इस वजह से और ज्यादा डर बैठा हुआ था मेरे अंदर की, तो ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि इतने मार्क्स आ जाए। इसका overall, like the revision time and all, were you able to match up with the timelines during the revision? Yeah, यस सर, आई स्टार्टेड लाइक ऑन अ सिंगल डे। लाइक जब मैंने सितंबर में तैयारी स्टार्ट करी, मेरा पहला गोल था कि सिलेबस खत्म करूं। तो फिर मैंने जो लाइव क्लासेस लगती थी वो मैं तब लाइव भी लगाता था, और सुबह के टाइम मैं पुरानी क्लासेस लगाता था जो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी थी, double shift. डबल शिफ्ट। और फिर जब जनवरी में वो नोटिस आया कि पोस्टपोन हो रहा है, वो 10 डेज मेरे वेस्ट गए। तब मैं नहीं पढ़ पाया अच्छे और से। कितना बोला था, नहीं करो नहीं करो। वो 10 डेज तो मतलब उसमें मैं और कर सकता था, बट चलो ठीक है। पर तब मैंने वो छोड़ा ही नहीं उम्मीद भी। फिर भी मैंने कहा कि क्या पता जल्दी हो सकता है, तो अभी करना चाहिए मुझे थोड़ा थोड़ा। February से March postponement was a blessing, I believe. यस यस सर, अदरवाइज फेब तक तो नहीं होना था मुझसे रिवीजन। अब तक तो सबका ही वो माइंडसेट ही हिल गया था फेब की डेट आने पे। Yes, sir. Sir, but I followed every advice that every teacher told. Like Varun sir once told, "Ki never let your books away." So I write that quote, "Never let your books away" on my notes. So what I did was, अगर मुझे किसी MCQ में confusion होती थी, तो मैं उसका concept book से देख लेता था। Like पढ़ता नहीं था, पूरी बुक पढ़ने का टाइम भी नहीं था, और सेंस भी नहीं है ना। that would be a very bad step at that time. तो सिर्फ उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख ली, और वो फिर अंडरस्टैंड हो जाता था मुझे, और मैं उसको याद रख लेता था, क्योंकि क्रैमिंग इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन यू आर गोइंग टू कवर सच अ वास्ट सिलेबस। सो मोर ओवर, जैसे मैम ने एक बार बोला था कि एक टॉपर गूगल की इमेजेस देखते हैं, सो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट गूगल फॉर इमेजेस आल्सो। सो दैट रियली हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज मेरी पिक्टोरियल मेमोरी काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू लाइक वर्ड्स। आई कुड रिमेंबर इमेजेस मोर। तो ये बड़ी चीजें हेल्प करी हैं जो मैम ने मतलब टॉपर्स की एडवाइसेस दी, बिकॉज इतने सालों से आप इंटरव्यू ले रहे हो हर टॉपर का, तो यू हैव मोर विजडम देन एनी ऑफ अस, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स। यू आर अमलगमेटर्स ऑफ ऑल टॉपर्स एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैंने हर एडवाइस को वो फॉलो करा। और सीरियसली मतलब आपकी एडवाइस, जैसे आपने बोला था कि 230 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो मैंने पहले 100 क्वेश्चन देखे, मुझे लगा इजी है पेपर, सो आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट नियर अबाउट 230। So I attempted near about 230, not exactly 230, थोड़े कम कर दे 226 के अराउंड। बट हाँ मतलब उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी, तभी मुझे लगता है मेरा रैंक निकल पाया इससे। बट अदरवाइज होना नहीं था, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट में कभी 210 या 200 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। मैं स्किप कर देता था उनको। बट थैंक एट यू फॉर लास्ट, बिलीविंग, थैंक यू फॉर बिलीविंग बेटा। यस मैम, आई फॉलोड एवरी एडवाइस। लाइक आई मीन इट। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, बट मैंने सच्ची में बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करके वो सारी चीजें फॉलो करी। इट्स रियली, सुनने में आसान लगता है पर प्रोसेस इज नॉट सिंपल, क्यों डॉक्टर ध्रुव? Absolutely, इसमें कोई डाउट नहीं है. And with the kind of motivation Bhavesh is talking about, I am sure there are very few people in the few students who are so motivated and who are ready to give their 100%. So Bhavesh, मुझे ये बताओ कि जो आपका ये लास्ट वीक था एग्जाम से एक हफ्ता पहले, what was your exact strategy which everybody should follow before what you think that they should follow this before going into exam to come out at a at a rank of 42 amongst 32,000 participants who appeared? So it's a big deal. So what did you focus on the last 1 week? उसमें ऐसा क्या mindset लाए, कैसे preparation किया? How did you structure your revision to get the best out of those 7 days? Yes, sir. Sir, last week I think is very crucial for such a preparation, because you have to remember everything, every single subject and every particular information, but you cannot remember the whole lot. So you have to structure your notes in such a way that your highlighted points, you just go through them. So in the last week, what I did was I did 3 subjects per day, like those important subjects.
that I felt very difficult. I kept it for like 2 days before. Like for pharma, it's a very volatile subject. So I preferred pharma on the last like 3 days before the exam. I read on the last day. I haven't read like कोई new चीज नहीं पढ़नी है last month में, वो तो चलो सारे teachers कहते थे. तो last month क्या मैंने I think Feb के बाद से कोई न्यू चीज नहीं उठाई, because anyways वो मुझे याद भी नहीं रहनी थी इतनी जल्दी, because it requires so many at least 2 revisions to remember that stuff. तो last week में I read 3 subjects per day so that I could remember maximum of information. और मैम ने भी एक बार बताया था हमें कि टॉपर्स क्या करते हैं, वो हर पेज को उल्टा के देख लेते हैं कि आप एटलीस्ट आप हर टॉपिक के गो थ्रू हो जाओ एक बार. तो मैंने वही चीज करी. मैंने लास्ट के वीक में सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करा. तो मेरी लास्ट एक लीव थी टू कंप्लीट इट, और उस टाइम मैंने और कुछ भी नहीं सोचा कि अच्छा होगा नहीं होगा. लाइक लास्ट वीक मैं पूरा ध्यान अपने नोट्स पे रखता था जो मैंने बनाए हुए थे, जो मतलब इंस्टीट्यूट में मतलब क्लासेस के थ्रू मैंने बनाए. तो और उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देखा मैंने. इवन पल्स भी नहीं देखी उस टाइम, या कोई भी अगर आप बुक एमसीक्यू कर रहे हैं वो भी नहीं देखा. सिर्फ नोट्स लास्ट वीक मैंने गो थ्रू करे. डॉक्टर That was- भावेश, लाइक जो आपने किया ना, आई थिंक वी हैव बीन लिसनिंग टू सिमिलर स्टोरीज, बट यस थोड़ा थोड़ा एक एडेड मसाला सबका है, कुछ सीक्रेट स्पाइस है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, दैट मेक्स यू डिफरेंट इन रैंकिंग्स. आई बिलीव थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो चलता है. These all factors, like I think this batch is so crazy is the word. जो आपका बैच, हम एक तो Yes. सेंचुरी मार चुके हैं हम लोग गवर्नमेंट रैंकर्स की. प्लस जो बातें आप कर रहे हो ना, ये आपको सुनने में शायद अजीब लगे. टू ऑल द व्यूअर्स, वी हैव बीन टीचिंग फॉर सो मेनी इयर्स. ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चे आपकी बात मान रहे हो, सारे बच्चे So लेक्चर rather, मतलब we should thank you and for believing in us. सारे बच्चे ने लाइव क्लासेस अटेंड करी, सारे बच्चे देर करी, पहले करी, रिकॉर्डेड देखी, किसी ने 2 बार देखी, किसी ने 1 बार देखी. वो बात नहीं है, पूरा सिलेबस टाइम पे फिर भी खत्म किया अच्छे से. सबने नोट्स पढ़े, सबने अपने नोट्स 4 5 6 8 बार रिवाइज किया, सबने टेस्ट दिए. पता नहीं, मे बी वी वर फॉर्चुनेट एनफ टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. No, sir. क्या कुछ तो इस You बार really लाइक गॉड हैज did a बीन lot. रियली काइंड कि वी बोथ वर resonating with every aspect of preparation which could have led to this kind of results. Yes. So those quizzes, your previous year sessions, like previous year question sessions, were really helpful for me. So 2 revisions तो मेरी उन्हीं के साथ हुई. और आपने एक बार बोला था, बहुत महीने पहले कोई आपकी वीडियो आपने डाली थी, मैं बाद में देखी थी, कि आपने क्या करना है. जैसे आप एक जिस दिन आपने क्लास लगाई, नोट्स लिखे आपने, उसके बाद आपको उसी दिन दोबारा पढ़ लो उसको, तो वो आपकी फर्स्ट रिवीजन होगी. तो मैंने वैसे ही करता था. जिस दिन लेक्चर लगाया उस दिन मैंने दोबारा वो पढ़ लिया. लाइक उसको मैं वैसे रिवीजन काउंट नहीं करता था क्योंकि वो याद नहीं रहती थी एनीवे, बट एक तरह से वो रिवीजन ही थी. आई थिंक सबकॉन्शियसली तो वो दिमाग में जा ही रहा था एक तरह से. ट्रू. आपकी स्टोरी सुन के ना बेटा, नो आई एम रिमाइंडेड ऑफ फिनिक्स सर. डॉक्टर ध्रुव, फिनिक्स याद है ना? एवरी सिंगल डे दैट फिनिक्स विल, एंड जिसने भी ये स्टोरी लिखी है ना, आई एम श्योर ही मस्ट हैव रिटन इट ऑन डॉक्टर्स ओनली. And especially students like you know, every day we are sad. Every day we have to get up and then study. And beta, you are a perfect example for that. Thank you so much, ma'am. Dr. Bhavesh, you're coming from a already good institution and may like you will definitely get a much better options after this. What is your like एक क्या दिमाग में पर्सपेक्टिव चलता है कि जब मैं तैयारी कर रहा हूँ, आपके साथ और भी इतने सारे कर रहे हैं, पूरा यूनिवर्स आगे पीछे हो रहा है, क्या फीलिंग्स, कैसे आप ये डिफाइन करोगे कि किस स्टेज पे आपको आके ऐसा लगता है यार जो मैं कर रहा हूँ ना वही बेस्ट है, या इससे ज्यादा भी मेरे को करना कर सकता था, या इससे कम करूंगा तो कुछ और प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा? सर ये मतलब ये फीलिंग तो आती है कि मतलब कंपटीशन क्योंकि इतना ज्यादा है, और इंडिया में तो हर चीज में आई थिंक कंपटीशन है. नॉट इन आवर लाइन, आई थिंक इन एवरी अदर फील्ड, बिकॉज पॉपुलेशन इज रियली हाई. ऑल्सो व्हाट आई बिलीव इज सर कि मतलब अगर आपने अब सोच ही लिया, आप इस चीज में पढ़ ही गए हो, तो पीछे क्यों हटना, या तो पहले ही शुरू ही ना करते, तो वहीं पे आप छोड़ ही देते. अब मैंने इवन सितंबर में व्हेन आई केम बैक होम ना, आई आस्क्ड माय फादर दैट आई रियली डोंट वांट टू लिव इन इंडिया एनी मोर, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी स्कोप नहीं होने वाला, आप मुझे बाहर भेज दो. पापा कहते नहीं,
बाहर तो नहीं जाना मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, सच बताऊं, क्योंकि आई हैव बीन मीटिंग ऑलमोस्ट मेनी स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब कॉलेजेस। अब आपने टॉपिक छेड़ा, पंजाब हैज अ नोशन कि मुझे बाहर जाना है, यस सर, यस सर, बट एक्चुअली आपके माय जैसे हाफ बच्चे ऑफ भी माय हैं जो यहाँ पे टॉप मार के बैठने की तैयारी कर रहे हैं। चाहिए इंडिया को, वी नीड डॉक्टर्स लाइक यू। सर एक्चुअली ये आधा इन्फ्लुएंस ये भी आया, मेरे मोस्टली 90% स्कूल फ्रेंड्स आर इन कनाडा, सो दे ऑल आर वेरी वेल सेटल्ड बिफोर मी, सो तो थोड़ा सा हो ही जाता है कि नथिंग रॉन्ग, इट्स ऑल बोथ साइड्स आर गुड, लाइक ऐसा नहीं है। अच्छा, व्हाट मेक्स यू अ हैप्पी पर्सन? क्या करते हो लेजर टाइम में, या क्या ऐसा करते हो जो आपकी एनर्जी को वापस रिजुविनेट कर देता है? सर एज सच कोई पर्टिकुलर नहीं, बट ये प्रिपरेशन के टाइम में आई यूज्ड टू वॉच फ्रेंड्स ऑन नेटफ्लिक्स। आपकी जनरेशन भी फ्रेंड्स देखती है? सर हम मैं हैं तो वो देखता जनरेशन, हूँ मैं तो देखता हूँ सर। नहीं, एवरीबडी वॉचेस इट। हमारी जनरेशन फ्रेंड्स वाली है। हम लोग तो आपस में जब गेट टुगेदर्स होते हैं, फ्रेंड्स के क्विज होते हैं हमारे, तो ओके। टेस्ट कितना याद है, क्योंकि हमारे टाइम पे लाइव आता था वो, मतलब एपिसोड्स टीवी टीवी, पे, नो स्टार सर, वी वर्ल्ड पे। वॉच लाइक वेब सीरीज ओनली, लाइक इट्स ऑन नेटफ्लिक्स ना, सो दैट्स व्हाई। वो तो फिर बाद में आई रिमेम्बर एक टाइम ऐसा था, कॉमेडी सेंट्रल पे फ्रेंड्स साल में 2 बार पूरा लगातार 24/7 आता था। हम लोगों ने यस। वो भी देखा है। मतलब हमारी जनरेशन को अगर आप पूछोगे, एवरेज सबने 5 से 10 बार फ्रेंड्स पूरा देख रखा होगा। जैसे आपने रिवाइज किया, हमने फ्रेंड्स रिवाइज किया हो। यस सर। सर यही नहीं फैक्टर, लाइक और भी फैक्टर्स हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, जैसे मेरे फ्रेंड्स वर वेरी सपोर्टिव, देयर वर 2-3 फ्रेंड्स, लाइक डिस्पाइट दे वर देमसेल्व्स प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, बट उन्होंने मोटिवेट करा, लाइक देयर वाज हेल्दी कंपटीशन दैट रियली मैटर्स अ लॉट आई थिंक। ऑल्सो मेरा एक और फ्रेंड है, एक्चुअली 2 फ्रेंड्स आर देयर, मैं उनको रैंट करता था, यार ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पढ़ी जाओ, नंबर तो फिर नहीं आने यार, लाइक वो सुनना ही, और कोई आपकी बात सुन रहा है वो भी बहुत लाइक बड़ी चीज है। मतलब मैंने सोचा था कि आपको भी कॉल करूं, पर फिर मेरे दिमाग में आता था मैम इतना कुछ कर रहे हैं, सर इतना कुछ कर रहे हैं, बिजी होंगे क्या, मेरी सड़ी सी बात को मैं एनी क्या टाइम यू कैन टाइम। गिव अस अ कॉल बेटा, एनी टाइम इन लाइफ एवर। मैम यस, बट मेरे मम्मा भी टीचर है, तो मुझे पता होता है कि लाइक जब स्टूडेंट्स कितनी ज्यादा, जब कोविड के टाइम में ऐसे ही हुआ था, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो दैट्स अ रियली हेक्टिक वन फॉर टीचर्स आल्सो आई थिंक। तो मेरे लिए तो लाइक टीचिंग जॉब इज सच अ डिफिकल्ट जॉब, आई कैन नॉट इवन थिंक, क्योंकि हमारी मेरे खुद के कॉल्स सुबह 7 बजे से शुरू होती हैं और रात के 11 बजे तक चल रही होती हैं, कोई ना कोई यस तो कर ही रहा होता है। यस वही उसी के कारण, सो आई नेवर लाइक, मेरे को नहीं ऐसा था कि मैं ऐसे डिस्टर्ब करूं, कि ये मतलब ये चीजें मैं हैंडल कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ लाइक खुद से, अगर ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी तो आई विल टॉक। नो, यू आर ब्रेव बेटे। थैंक यू सो मच। क्या डॉक्टर ध्रुव, क्या कहते हो ऐसे शांत बच्चों के लिए आप? मैं शरीफ इनफैक्ट बच्चे, इतने बहुत शरीफ बच्चे इतने हैं टॉपर्स जो के तंग भी साथ, नहीं करना चाहते टीचर्स को अपने। मैं इतने स्टूडेंट्स के साथ मिला हूँ, बट द मोटिवेशन एंड क्लैरिटी जो मुझे भावेश में दिख रही है related to his goals and how to approach it is very rare to find in nowadays. मेरा तो थैंक बहुत यू सारे सो मच। स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग रहता है, बट दिस इज रियली नाइस। तो भावेश, मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या आपको अपने अंदर, ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लगते हैं कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर मेरे अंदर, तो दैट विल सेट मी अपार्ट फ्रॉम the entire competition, that sets me different from what the entire world is doing. Everybody was preparing, the entire country was preparing, but what sets you apart from them? ऐसा क्या characteristics हैं, क्या behavioral factors हैं जो आपको लगता है आपके अंदर हैं जिससे मैं बिल्कुल बाकी लोगों से अलग हूँ? सर ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं अलग हूँ, लाइक आई वाज अ इसको ना पार्ट ऑफ रिफ्रेश करता हूँ क्राउड मैं एक ओनली। लाइन में, व्हाट मेक्स यू द भावेश नॉट जोशी सुपर हीरो? जैसे मैं खुद को बताती हूँ कि आई एम गुड बेटर वॉट एवर, बट जब मैं जाती हूँ सर लेक्चर लेने या कुछ भी, तो मैं अपने आप को बोल के जाती हूँ कि यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सर नहीं नहीं, ऐसा कभी पहले मैंने सोचा नहीं वैसे तो, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ क्राउड ओनली, मेरे से आगे भी बहुत लोग हैं, मेरे से पीछे भी हैं, बट वन थिंग विच आई लर्न थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन विच सेट्स मी अपार्ट इज द एक्सेप्टेंस ओनली, that accept everything, validate yourself. This is what my one of the closest friend told me to follow in my life. Also my parents really helped me a lot in that, so I think that's amalgamation of every other's experience, that this is something which I have this quality that I learn from everybody.
Hmm. Let So me I- guess, you are Chandler of Friends. Sir, I don't crack jokes like him most of times. Personality wise, your favorite character. Sorry, sir. Your favorite character. In Friends, so that's Chandler only. देखा गलत नहीं था मैं. So this is the only quality I think that sets me apart is that follow what you can actually help you out. Like अपने आप को एक Hmm. ऐसे उस environment में रखना है जहाँ पे आप grow कर सको. मेरा भी चैंडलर ही है, इसलिए मैं could correlate थोड़ा सा. So, Dr. Bhavesh, जाते जाते कोई sweet short message for your juniors, for thousands of YouTube viewers who will be looking up to rank 42. सपना Yes, होता है sir. 2-digit rank लाना, वो भी कितनी आगे. Yes, sir. Sir, क्या the only सीक्रेट thing is, बताना चाहोगे? ऐसा सीक्रेट जो आप कहोगे यार ये कर लो तो होता ही है, ऐसा वर्क तो करेगा. sir, I think there is no secret. I think we already know things. It's just that we don't realize it. Like, believe in yourself. Even if the worst of worst things happens in your life, there is still a chance that there will be a sunshine. So I think believe in yourself is a very underrated statement. But if you believe in yourself, you can achieve anything. Like anything. This Wow, is the I'm only so recipe. happy to see your confidence, beta. तुम And पहले you नहीं are going to था. achieve anything in life. Anything, everything, which you want, you can now establish. Thank you so much, ma'am. I think we are numb actually listening to you, watching you, how you speak, and Wise you all are. And it's amazing. Thank you so wise much, and ma'am. stable actually, like very Hmm. consolidated, True. assured what he is speaking actually. Hmm. That God bless you. May you achieve many more heights Sir, like thank you always, so much. and all the best. Best of Thank you luck. so much, sir. Your Thank you so much. parents are there, mom is there. No, ma'am, she's on job and my father is in business. Sir. Okay. But convey our regards and congratulate them too. Thank you so much, ma'am, for sure. All the Thank best. you. All the best. Thank you so much, sir. Thank you Best so much. of luck, Peter. Thank you, ma'am.